quickly dip into Lok Sabha, see what's happening there. One is expecting fireworks with what's been happening in Kolkata. आप जानकारी चाहते हैं, वो जानकारी मैं अपने विभाग से लेकर इनको उपलब्ध कराने का काम करूंगा। नंबर 2 श्री बी विनोद कुमार। Statement is laid on the table, madam. श्री के अशोक कुमार। Trade defect with China has widened over the last 2 years, and it has reached over $57 billion. Therefore, the export of raw sugar to China will help somehow to reduce this trade defect gap. I would like to know whether the China has released raw sugar export quota for the year 2019 to enable use to export raw sugar to China. माननीय अध्यक्ष महोदय, राइट क्वेश्चन इज बीन रेज्ड बाय राइट टाइम। भारतवर्ष के अंदर पिछले 2017-18 और 18-19 के अंदर डोमेस्टिक कंजम्पशन से ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है। इन 2017-18 हमारा प्रोडक्शन 322 लाख टन था, while the consumption, domestic consumption was only 255 lakh metric ton. इसी प्रकार से 2018-19 में जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आ रहा है वो 315 लाख टन है, while the domestic consumption is 260 lakh टन। इस कारण से there is a surplus position in the sugar के अंदर हमें एक्सपोर्ट करने की बहुत आवश्यकता है। शुगर इंडस्ट्रीज और शुगर कैन फार्मर जो है उनको, क्योंकि एरियर जो था काफी भुगतान, जब चीनी का भाव 2016-17 में जब प्रोडक्शन कम हुआ तो शुगर का पर किलो जो भाव था खुदरा, डेट वाज अबव 40 रुपए से ज्यादा हो गया था। अभी जो भाव है वो 2017-18 में और 18-19 में ज्यादा प्रोडक्शन से भाव काफी कम आने लगे, 25-26 रुपए किलो हो गया था। इस कारण से गवर्नमेंट, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कई ऐसे स्टेप्स उठाए जिसके कारण शुगर फैक्ट्रीज को, शुगर कैन फार्मर्स को। All right, so as you can see, there's the usual pandemonium in Lok Sabha, and as you could hear in the backdrop, one could even hear the opposition parties raising the CBI Kolkata face-off issue in Parliament. Akhilesh Yadav also speaking. Let's listen in. बेइज्जत और कैसे उन्हें घेरा जाए। सवाल लोकतंत्र में यह है कि मुद्दों पे बहस होगी। राजनीति को इस स्तर पे लाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। सर, लेकिन जिस तरह से सीबीआई के जो ऑफिशियल्स हैं उनको डिटेन किया गया, कोलकाता में पुलिस ने डिटेन किया, क्या आपको लगता है सीबीआई के साथ इस तरह का सलूक करना चाहिए? सीबीआई को सबसे ज्यादा है और संस्था को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया तो कांग्रेस, बीजेपी ने। पहले कांग्रेस का भी इस्तेमाल की होगी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या इस्तेमाल कर दिया। आप देखिए दिल्ली में क्या हुआ, कितना झगड़ा था, एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर के खिलाफ, एक विभाग दूसरे विभाग के खिलाफ। ये संस्थाएं चलेंगी कि नहीं चलेंगी, लोग भरोसा किस पे करें? सर, जिस तरह का ये पूरा मामला आया है, क्योंकि बंगाल में हमने देखा है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चॉपर नहीं लैंड करने दिया, पहले अमित शाह को परमिशन नहीं दी। आप इस पर क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है बंगाल सरकार भी लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, जो बीजेपी के नेता हैं उनको भी रोकने की कोशिश की है? मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की भाषा का आप आर्काइव निकालिए। कैराना का चुनाव था, विपक्षी लोगों से कहते थे कि दम हो तो आइए। क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? मुख्यमंत्री की भाषा ये है कि ठोक दो। क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? मुख्यमंत्री ये कहते हैं विपक्ष पूरा चोर है। क्या मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है? ये नहीं जा पाई, अच्छा हुआ। जो जहर यहाँ उगलते हैं वही जहर शायद बंगाल में उगलते। और मैं बंगाल के लोगों से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहें। वो धर्म को बांट करके, जातियों को बांट करके राजनीति करने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो बहुत करीब से उन्हें देखा है। सर, आपकी ममता बनर्जी जी से फोन पर बात हुई है, क्या बात हुई और आपने क्या बोला? ममता जी से मेरी बात हुई है, मैंने उनका समर्थन किया। हमारी पार्टी उनके आंदोलन को और उनके तमाम सवालों का समर्थन करती है। थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का साफ तौर पर यह कहना है कि
All right, very interestingly, their opposition parties extending their support to Mamata Banerjee as she is participating in that dharna since last night. Let me go straight across now to Supriya. Supriya, we just heard those opposition parties raising slogans, raising the issue, the face-off between the BJP and the TMC in Parliament as well. What's going to be the opposition strategy? What's going to be their plan in the days to come? Avantika, what is really interesting is that it was the Congress Party's MP Rajiv Sata who put forward that all the discussion in connection with that of the Lok Sabha's key issues should be stalled, and rather the discussion on the face-off between the West Bengal government and the centre should be taken up on the priority. Meanwhile, the TMC MPs are protesting to the hilt. Well, at the moment, the opposition is in Rajya Sabha. They have stalled the proceedings. The Rajya Sabha has been adjourned till 2 p.m. As far as the Lok Sabha is concerned, here the opposition members are protesting in the well of the House, while the discussion on the issue of the state of economy and the unemployment is going on in the lower house of the Parliament. What is really interesting is that there is a meeting which has been called by the opposition leaders. They are going to meet and they are going to brainstorm the entire issue. Also in the evening at 5:30 p.m. we heard that the entire opposition delegation will be going to the Election Commission. Though on the issue of EVM, however, we are hearing that this matter might also be raised before the Election Commission of India, and the opposition is saying that they have all the avenues open to take on the central government as far as this face-off is concerned. Absolutely. Gaurav, when the Trinamool Congress MP Sudeep Bandyopadhyay was arrested in the chit fund scam, that incident had sparked angry protests from the ruling party supporters. They even laid siege to the BJP office in Kolkata. But, this is the first time that one is seeing the Chief Minister literally taking on the CBI and also making all allegations against the government of being hand in glove and sitting on this dharna. After a very long time, she has gone in this dharna, staging a protest on what happened last night. Rajiv Kumar, the Kolkata Commissioner of Police, is considered extremely close to Mamata Banerjee. So much so that as Chief Minister, she went to the Police Commissioner's house. That's where the meetings were held. And that is where, the CBI officials were in a way arrested or detained, taken to the Salt Lake police station. They were arrested, and subsequently Mamata Banerjee came here, Metro Channel, the area where we are. This is where she'd also sat on the Shingur dharna, which in a way galvanized her party. This again is a similar attempt ahead of the 2019 elections. While just a short while back she was saying there should be no sloganeering, there should be no shouting, this is peaceful, this is a fight to save the constitution. What was significant is yesterday you had top police officers who were sitting here with her, something that even the central government's remarked is unprecedented. Policemen on a dharna. Of course police say that they are only looking after her security here, considering she stayed here the entire night. Yesterday it was on the street. Today there's a stage that's been constructed, but larger number of TMC workers and activists are now coming here. There is also information that other leaders will start coming here. So there's one Samajwadi Party leader who's come in. It's being said that Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal will also reach here later in the day. So somewhere down the line, this is now going to be a massive opposition show of strength and unity. Very interesting. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you would love to.